प्रख्यात लेखक आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी हमारे साथ हैं। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूं कि देवेंद्र मेवाड़ी जी के साथ कृपया मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अतिथि को अंग वस्त्रों और साहित्य अकादमी के प्रकाशन भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और शब्दों से स्वागत करें डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी। नमस्कार। श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी, Professor Mohammad Jaman Adurja Saab, all the participants of this program and friends. I'm glad to welcome all of you for this symposium on fantasy and science fiction in Indian languages since 1947. This is a very important discussion as there is increased interest on the one hand in the Indian science fiction of the contemporary times and recasting of age-old fantasy literature of India in the new mold on the other. There will be no two opinions in that India has always had a plenty of fantasy literature for centuries, even though utopian literature was few and far between. The epics of India, the Ramayana and Mahabharata, have yielded to enormous generation of fantasy literature for the past 2 millennia. There is lot of study of the variations and versions of these epics, but little focus on the stories and subplots therein and how they generated lot of fantasy literature throughout the land. The epics are followed closely by Puranas and Upapuranas. Puranas themselves were very fertile grounds for fantasy and numerous anthropomorphism of various elements, animals and countless gods, and their forms led to similar fantasy stories. In the contemporary times, the revival in the mythological fantasy is exemplified by the success and interest in Amish Tripathi's Shiva trilogy and Ramachandra series, Devdutt Patnaik's mythology books, works just touching upon the epic, such as Shashi Tharoor's The Great Indian Novel, S.R. Bhairappa's Parva, or Iravati Karwa's Yuganta, are the more recent work based on various characters such as Chitra Banerjee Divakaruni's The Palace of Illusions, or Kavita Khande's Sita's Sister, or Krishna Uday Shankar's The Aryavarta Chronicles, or Amruta Patil's Adi Parva, and Sandipani Dev's The Last War. Of course, not all fantasy and speculative fiction of the recent times are based on the Indian mythology. Amitav Ghosh's Calcutta Chromosome, or Vandana Singh's The Woman Who Thought She Was a Planet, Manjula Padmanabhan's great verse Islands of Lost Girls and Three Virgins and Other Stories, or in such recent times Gautam Bhatia's The Wall, Priya Saruka Chabriya's Clone, etc. clearly show contemporary Indian fantasy writing is not merely about fantasy born out of mythology. The list is large. For the want of time and for the brevity's sake, I have just mentioned a few. Please take no offense at my not giving out the list entirely. Before I move to the other part of the topic of this symposium, I would like to say that India is a land of diversity. I say that because when it comes to Indian fantasy literature based on mythology, people immediately think of Sanskrit mythologies. Every region and language have had their own epics and mythologies. Many oral epics in unwritten languages and tribal communities do not have any connection with the mythologies of Puranas and the epics.
In the same way, in the modern period too, writers in many languages have been creating fantasy literature in their mother tongues, and they are more related to the centuries-old mythologies in their communities rather than the commonly accepted Puranic mythology. If we accept K.C. Dutt's A Journal of 48 Hours of the year 1945, which was published in 1935 as the first science fiction of India in the modern period, we have had fairly substantial contribution in various languages too. But Bengali writers have a great share to begin with in the 19th and 20th centuries. J.C. Bose Bangla story Nirudeshar Kahani. In his first science fiction, Pandit Ambikadat Vyasa's Ascharya Vrittant, Rahul Sankrityan's Socialist Utopia by Biswi Sadi are some of the early attempts of science fiction in the Indian languages. However, I feel that Satyajit Ray's Professor Shanku's stories in Bengali and Jayant Narlikar's Krishna Vivar in Marathi set in motion for more writers attempting science fiction in Indian languages after 1970s. For the want of time, I just mentioned two before concluding my speech. Subodh Javadekar's A Journey into Darkness in Marathi and the science fiction works by Sujata, Yera Murugan and Sudhakar Kasturi in South India present a fine future for science fiction in India. With these few words, I am glad to welcome all of you for this symposium on fantasy and science fiction in Indian languages since 1947. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी। डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने साइंस फिक्शन लेखन की क्या परंपरा रही है और समकालीन दौर में कौन सी ऐसी कृतियां हैं उन पर प्रकाश डाला और एक तरीके से इस कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन भी कर दिया है। मैं उद्घाटन वक्तव्य के लिए देवेंद्र मेवाड़ी जी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं आपका संक्षेप में परिचय करवा देता हूं। लगभग 5 दशकों से साहित्य और विज्ञान पर लिखने वाले आप प्रख्यात हिंदी लेखक हैं। आपकी लगभग 30 पुस्तकें और लगभग 2500 लेख प्रकाशित हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं नाटक में विज्ञान, विज्ञाननामा, सौरमंडल की सैर, मेरी विज्ञान डायरी, दिल्ली से तुंगनाथ वाया नागनाथ आदि। आप अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत हैं, जिनमें आत्माराम पुरस्कार, विज्ञान लोकप्रिय पुरस्कार, ज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मान और भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार जैसे कई अलंकरण। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय राव साहब और तिवारी जी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ साहित्य अकादमी का कि जिन्होंने इस विषय का चयन किया आज के इस परिसंवाद के लिए, क्योंकि सामान्यतः विज्ञान और साहित्य को करीब आने ही नहीं दिया जाता है और दोनों के बीच लगातार एक खाई बनी रहती है। जैसे कि 1959 में सीपी स्नो अपना व्याख्यान दे रहे थे और तब बात उठाई थी और दुनिया भर में काफ़ी चर्चा हुई थी और उसके बाद कई देशों में कई बार कई तरह से साहित्य और विज्ञान के बीच बात हुई है। फल ये हुआ है कि जब किसी साहित्यकार से पूछते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, न्यूटन ने बताया है, सुनते हैं तो कहते हैं उससे क्या मतलब, मैं विज्ञान का आदमी थोड़े हूँ, मैं तो साहित्यकार हूँ। और जब विज्ञान के व्यक्ति से पूछते हैं गोदान पढ़ा है, गोदान, मुझसे क्या मतलब, मैं तो वैज्ञानिक हूँ। तो ये जो दोनों के बीच की खाई है, जो जगह छूटी हुई है, इस खाई को पूरा कैसे किया जाएगा, इस पर दुनिया भर में चर्चाएं हुई हैं। हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में विज्ञान एक तो प्राचीन काल का विज्ञान था, जिसमें बहुत कुछ हमारे प्राचीन वाङ्मय में लिखा गया है। उसमें 2 तरह का है, एक कल्पना प्रसूत है जो कि पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, जैसा आदरणीय राव साहब ने भी कहा, जो कल्पना पर आधारित था, फैंटेसी साहित्य था।
वो सब पौराणिक कथाएं हमारी उसमें आती हैं। और जहाँ विज्ञान मौजूद है, जहाँ विज्ञान के धागे से एक कहानी बुनी जा रही है, वो विज्ञान कथा है, विज्ञान गल्प है, साइंस फिक्शन है। ये फर्क हमें ज़रूर करना चाहिए। हिंदी में भी कई बार बात होती है तो कई बहुत जाने माने विज्ञान लेखकों के नाम लिए जाते हैं कि उनके अलावा और किसने लिखा। ये फर्क क्योंकि पता नहीं होता है। फिक्शन लिखना एक अलग कला है, साइंस राइटिंग एक सूचनात्मक साहित्य लिखना बिल्कुल अलग कला है। शुरुआत तो बहुत पहले, जैसा अभी जिक्र हुआ, बांग्ला से हुई। बांग्ला में आचार्य जगदीश बसु के बारे में बताया जाता है कि कहानी के रूप में पहली बार पातालक तूफान के नाम से वो छपी और निरुद्ध शेर कहानी के नाम से उन्होंने गुमनाम से भेजा था। और जब पता लगा कि ये तो आचार्य बसु की कहानी है तो पातालक तूफान नाम से वो प्रकाशित हुई बात में। लेकिन ये बाद की बात है। मैं एक साहित्य विशेषांक जो दीपावली के अवसर पर प्रकाशित होते हैं, उसमें बलाका का जो साहित्य का विशेषांक था, उसमें एक शोधपरक लेख था जिसमें दिया हुआ था कि असल में 1856 में जगदानंद रॉय ने शुक्र भ्रमण कहानी लिखी थी, वो बांग्ला की पहली कहानी होनी चाहिए। और उसके बाद हीरालाल हेमलाल की कहानी उसके बाद आई और फिर आचार्य जगदीश बसु की आई। लेकिन ये शोध का विषय होता है, इस पर तो जो शोध करना है वो जब काम करेंगे तब तय होगा कि वास्तव में कौन है। क्योंकि कई बार हम लोग इसमें लेते हैं कि आचार्य जगदीश बसु ने तो उन्हीं ने किया होगा, लेकिन शोध से ये बिल्कुल स्पष्ट होगा। जब बांग्ला से बात हुई है तो हमारे देश में आज़ादी के बाद की बात हम तब लेंगे जबकि थोड़ा सा उसकी जड़ों की ओर हम देखेंगे। तो हम जड़ों की ओर बांग्ला में जैसे देख रहे हैं कि जगदानंद रॉय और हेमलाल का जिक्र हुआ, उसके बाद जगदीश बसु की बात हुई। उसके बाद प्रेमेंद्र मित्र आए, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर दिए, ऐसे चरित्र दिए, घनादा जैसा, घनादा समुद्र में सारा घनादा, वो घर घर में इतना लोकप्रिय हो गए कि घनादा के कारनामे क्या क्या घनादा कर रहे हैं। साइंस जो है धीरे से कहानी के जरिए, कहानी के माध्यम से धीरे 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 वो आम लोगों के समझ में आने लगा। जब वो समझ में आने लगा तो लोगों को लगा अरे ये बिल्कुल नया क्षेत्र हो रहा है। हम तो साहूकारों, जमींदारों की, राजा रानियों के, राजकुमार राजकुमारियों की कहानियाँ लिखते थे पिछले गुजरे हुए जमाने की, उसकी जगह पर ये बिल्कुल नई चीज़ें आ रही हैं, तो इन पे क्यों न लिखा जाए। घनादा जैसे लोकप्रिय हुए। उसी तरह से जब सत्यजित रे जैसा अभी बात हुई कि प्रोफेसर शंकु को लेकर के हुआ है, प्रोफेसर शंकु भी उतने ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए और उनकी तमाम कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी। मुझे भी उनकी कहानियाँ बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक कौवे पर कोरबस करके कहानी है उनकी, क्या मज़ेदार कहानी, आप छोड़ नहीं सकते उसे। इतनी मज़ेदार एक कौवे पर कहानी हो सकती है, किस तरह से वो चौंच से सारा काम कर रहा है और उन्हें लगता है कि अरे इसमें तो इंटेलिजेंस है, इसमें तो बुद्धि है, ये तो कुछ कर दिखाएगा कर, और धीरे धीरे उसका प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेन करते हैं और कैसे फिर वो क्या क्या कुछ करता है, कैसे उसको लेकर के वो फिर विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ सेमिनार में मौजूद हैं और कैसे जादूगर किस तरह उसको अपनाना चाहता है, क्या क्या जाल रास्ता वगैरह। बहुत ही रोचक कहानी इस तरह से, उनकी तमाम कहानियाँ इस तरह से बहुत रोचक हैं। और जो परग्रही जीवन है, जो पृथ्वीतर जीवन है, अन्य लोगों में कहीं हो सकता है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा जागरूक हम लोगों को अगर किया तो सत्यजित रे ने किया। सत्यजित रे का कहा तो ये भी जाता है कि जो ईटी फिल्म थी मूल रूप से उन्हीं की कहानी पर वो बनी थी, जिसके बारे में वो जीवन भर कुछ बोले नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि वो उनकी कहानी पर आधारित थी। इसके बाद बांग्ला में तमाम लोगों ने लिखा, अदरीस वर्धन है, समरजीत कर हैं और कई नई पीढ़ी के लोग आए जो कि आज़ादी के बाद जिन्होंने इस विषय को अपने लेखन का मुद्दा बनाया और उस पर जो है उन्होंने विज्ञान कथाएं लिखना शुरू किया। संकर्षण राय हैं, समरजीत का एक मैंने उपन्यास पढ़ा था, क्योंकि मैं साहित्य और विज्ञान में बहुत फर्क मानता ही नहीं, जैसा कि शुरू में मैंने कहा। धर्मियों में एक अनुवाद हो गया था। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कई भाषाओं में से अनुवाद आए
जिसमें सबसे अधिक बांग्ला से आए। विमल मित्र को हमने उसमें पढ़ा, महाश्वेता देवी को हम उसमें हमने पढ़ा, इसके अलावा आशापूर्णा देवी को हमने पढ़ा, शंकर के उपन्यास हमने पढ़े। और एक बार अचानक ये हुआ कुछ वर्ष पहले कि अशोका होटल में एक पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक उनके सम्मेलन था, और उस सम्मेलन में रात का खाना वहाँ पर था और सब बाहर बैठे हुए थे, अंगेठियाँ जली हुई थी। तो अचानक एक मेरे जानने वाले घोष साहब थे, घोष साहब ने कहा देवेंद्र इधर आओ, तुम जानते हो इनको? मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं जानता हूँ। शौकर, ये शौकर है। मैं अचानक इतने बड़े लेखक के एकदम सामने, चौरंगी का उपन्यासकार मेरे सामने जो है वो बैठे मुस्कुरा रहे थे, और मेरे मन में एक सवाल था जो कि कभी शंकर से मैं कैसे पूछता, लेकिन उस दिन ध्यान आया। धर्मियों में एक अनुवाद छपा था आदमी और कीड़े, और वो उनके एक छोटे उपन्यास का उनकी चर्चा है चौरंगी और तत्वान जाने रहे और तमाम उनके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन इस उपन्यास को कम जानते हैं, और हिंदी में न जाने कहाँ से प्रकाशित हुआ होगा। इसका नाम है निवेदिता रिसर्च लेबोरेटरी। निवेदिता रिसर्च लेबोरेटरी में मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा ये थी, मैं सोचता था कि शंकर एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, एक कीट विज्ञानी हुए बिना ऐसा उपन्यास लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब तत्वान जाने रहे पढ़ा तो पता लगा कि नहीं, तो लॉयर रहे होंगे। मतलब एक लेखक कितना शोध कर सकता है, कितना श्रम कर सकता है, कितने रेफरेंसेस पढ़ सकते हैं। निवेदिता रिसर्च लेबोरेटरी पर मैंने उनसे पूछा था कि सर क्या ये आप इसको विज्ञान गलत मानते हैं, कल्प विज्ञान, क्या ये साइंस फिक्शन है? तो कहने लगे कि जब कोई भी लेखक एक अच्छी कहानी लिखता है, एक अच्छा उपन्यास लिखता है, वो उसके लिए केवल एक कहानी और एक उपन्यास होता है। उसको कहाँ रखना है, क्या रखना है, ये तो फिर पाठकों का काम है, अन्य लोगों का काम है, समालोचकों का काम है। लेकिन लेखक के लिए वो सिर्फ कहानी और उपन्यास है। तो मेरे लिए भी निवेदिता रिसर्च लेबोरेटरी एक मेरा उपन्यास है, ये उन्होंने कहा था। ऐसे ही जो है बांग्ला में जिस तरह की चर्चा हुई, ऐसे मराठी में शुरुआत तो कहते हैं कि जैसे यहाँ 1856 से हम बात कर रहे थे, मराठी में 1916 में पहली बार जो रिकॉर्ड होता है हिस्ट्री में बताते हैं, वही बताया जाता है तारेचे हास्य जो है वो पहला जो है उपन्यास था, और वो उस समय सामने आया 1916 में। और 1916 हिंदी के लोग शायद जानते होंगे कि 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी जी वो 3 कहानियाँ रच रहे थे जिनसे आज वो हिंदी साहित्य में अमर है। उसने कहा था, उसी दौर की कहानी है, उन्होंने विज्ञान कथा तो नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने आँख पर 5 लेखों की एक सीरीज जरूर लिखी, एक लेखमाला लिखी जो आँख के बारे में थी। उस दौर में तब ये तारेचे हास्य 1916 में लिखी जा रही थी। उसके बाद फिर कुछ उपन्यास आए, उसके बाद आगे चल करके डॉक्टर नार्लिकर का आगमन हुआ। डॉक्टर नार्लिकर के साथ एकदम ये आज़ादी के बाद की बातें हैं, डॉक्टर नार्लिकर भी एक बार मुंबई में मिल गए थे। वो कैंटीन में खाना खा करके कमरे तक उनको जाना था और हल्की बारिश उसी समय बंद हुई थी। मैंने कहा सर मैं आपको छोड़ दूँ? कहने लगे हाँ आइए। साथ गए, मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि आपके बारे में मैंने पूरा पेज डेक्कन हेराल्ड का पढ़ा था जो कि आपके लेखन के बारे में था। उसमें एक जगह लिखा था कि आपने अंतरिक्ष विस्फोट कहानी जो है वो साइंस फिक्शन एक हवाई अड्डे पर बैठ के लिखी। कहने लगे हाँ, मैं कलकत्ता से आ रहा था, मैं वहाँ बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, लेकिन फ्लाइट लेट थी, 2-1 घंटे मेरे पास थे, तो मैंने नोट निकाली और मैंने वो अंतरिक्ष विस्फोट लिख डाला। ये डॉक्टर नार्लिकर बता रहे थे। इसके बाद उनकी खैर अन्य कहानियाँ पढ़ने को मिली। भारतीय ज्ञानपीठ ने एक बार प्रकाशित किया था यक्षोपहार, बहुत अच्छी कहानियाँ उनकी थी, वे कहानियाँ पढ़ी, बहुत अच्छी कहानियाँ। लेकिन वायरस उपन्यास जब आया तो वो उतना लोकप्रिय शायद नहीं हुआ, क्योंकि भाषा थोड़ा जटिल रही होगी, और उनकी कहानियों में भी कई जगह अगर अनुवाद सही नहीं है तो हर भाषा का अपना एक कहन होती है, हर भाषा का एक अपना मुहावरा होता है, अपने तरह के खम पेंच होते हैं। तो कई बार अगर अनुवाद सही नहीं हो रहा है तो वो मौलिक का भाव आ नहीं पाता है। तो ये उनके अनुवादों में भी दिक्कत दिख रही थी। लेकिन उसी में एक उपन्यास था लक्ष्मण लोढ़े और चिंतामणि देशमुख का, मराठी में।
उसका अनुवाद भी भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया था और वो पढ़ने को मिला। अनुदित उपन्यास का नाम था संभवामि युगे युगे। बहुत ही खूबसूरत कल्पना, मुझे तो विशेष रूप से बहुत अच्छा लगा। डानिकेन की एक उन दिनों बड़ी चर्चा थी दुनिया में, जिन्होंने लिखा था चैरियट्स ऑफ गॉड्स कि देवता आए थे धरती पर। उन्हीं ने तो ये मिस्र के पिरामिड और आपके लातीनी अमेरिका में जो है वहाँ पर माया सभ्यता के सारे उस समय के सूर्यदेव के मंदिर और ये सब जो अजीबोगरीब चीज़ें हैं जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझा हुआ है, वो डानिकेन के हिसाब से देवता आए थे, उन्होंने किया होगा। इन्होंने इसी सूत्र को लिया, लक्ष्मण लोढ़े और चिंतामणि देशमुख ने, और इन्होंने इस तरह से दिखाया कि एक पूरी कहानी डेवलप की करते करते एक सुदूर अंतरिक्ष से एक अंतरिक्ष यान चला आ रहा है जिसका पता ही नहीं लग रहा है क्या है, बड़ा उसमें उलट पुलट होती हैं तमाम चीज़ें और धरती से लगातार हमारे वैज्ञानिक भेज रहे हैं और आखिर में जो है देखा जाता है और यहाँ से तैयारी हो जाती है कि दुश्मन का है और ये हमारे यहाँ आकर के पृथ्वी पर कहीं कब्जा न कर ले, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। और जा करके अंततः उसमें विस्फोट कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। उससे ठीक पहले दो उसमें एलियन निकल करके आते हैं, वो देखते हैं और बच्चों की तरह हाथ हिलाते हैं, वो स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन तब तक विस्फोट हो गया, कोई ऑर्डर पलटे नहीं जा सके और वो खत्म हो गया। तो तब याद आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें तमाम दुनिया भर की समस्याओं से मुक्त करने के लिए संभवामि युगे युगे फिर कहीं से कोई देवता आ रहे हों, इस चीज़ को लेके बड़ा मज़ेदार उपन्यास मराठी का पढ़ने को मिला। उसके बाद जैसा अभी जिक्र हुआ सुबोध जावड़ेकर हैं, निरंजन घाटके हो गए और इसके अलावा डॉक्टर बालफूट ने मराठी और इसमें अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा है। खुद डॉक्टर जावड़ेकर ने मराठी और अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उनकी जो आत्मकथा है उसको साहित्य अकादमी ने सम्मान दिया है, जो कि हम सभी लोगों का सम्मान है कि एक वैज्ञानिक की आत्मकथा को इस तरह से साहित्य का प्रतिष्ठित और देश का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान मिला है। इसलिए ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब हिंदी में आते हैं। हिंदी की चर्चा जो है अंबिका व्यास का जिक्र किया अभी राव साहब ने, तो उसमें 1884 से 1888 तक ये धारावाहिक पीयूष प्रवाह में छपा था कहा जाता है, वो प्रमाण है उसके। लेकिन वो उसी तरह की चीज़ थी जो कि जिस समय पेरिस में बैठा हुआ एक दुनिया का जाना माना कथाकार लिख रहा था जूल्स वर्न, उसमें वो रोमांचक सारी यात्राएं लिख रहा था। गोल्फियर बंद जो है वो बैलून उड़ा चुके थे आसमान में और तमाम कल्पनाएं हो रही थी कि अगर इस तरह से तो कल आदमी पहुंच जाएगा आसमान में, ये सब सोच रहे थे। न जाने कहाँ से इनको लगा कि रोमांचक यात्राएं मुझे लिखनी चाहिए। इन्होंने पृथ्वी के चारों ओर बैलून से घुमा दिया, इन्होंने समुद्र के तल में जो है 20,000 अंडर सी क्या वो है 20 लीग्स जो भी है, तो ये जो है उन्होंने लिखा ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी के भीतर जाकर के वातावरण लोग दिखाने का। तो जूल्स वर्न इस तरह बहुत कुछ लिख रहे थे। और जिस समय हरिद्वार में हमारे देश में गंगा नहर की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भाप का पहला इंजन वो हरिद्वार से जो गंगा नहर जा रही थी उससे रूट में जाकर के वहाँ एक छोटी नदी के कारण जो है वो रुक जाता था। तो ये हुआ कि एक भाप का इंजन चाहिए जिस पर ट्रेन के डब्बे लगाए जाएंगे, मिट्टी भर भर करके उसे ऊंचा उठाया जाएगा। वो आज भी वो एक्वेडक्ट वहाँ पर है। और जब ये खबर उस जूल्स वर्न ने सुनी पेरिस में, तो उसने कहा कहाँ वो देश जहाँ सारे मतलब जादूगर और जहाँ पर कितनी तरह के जो है वहाँ पर लोग और क्या क्या कारनामे तांत्रिक और ये रस्सी पर आसमान की ओर चल के गायब हो जाने वाले वो सब लोग, तो ऐसे देश में जो है वहाँ भाप का इंजन पहुँचा है। तो उसने एक उपन्यास यहाँ हमारे देश को आधार बना के लिखा था कानपुर डेविल ऑफ कानपुर, ये एक उपन्यास है उनका छोटा सा डेविल ऑफ कानपुर, जो उस घटना पर लिखा है जिसमें एक हाथी का रूप दे करके और वो एक मर्डर मिस्ट्री को हल कर रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से धीरे धीरे जड़ें पकड़ करके विज्ञान कथा लेखन साइंस फिक्शन आगे बढ़ने लगा।
1916 के आसपास देवकीनंदन खत्री जी जो है उनके बारे में सब अन्य भारतीय भाषा भाषी भी जानते हैं, किस तरह हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने लगातार एक श्रृंखला अपने उपन्यासों की लिखी। और विदेशों से जो कुछ साइंस की खबरें आ रही थी वो पहली बार हुआ, उन खबरों को लेके उन्होंने वो कलपुर्जे अपने उपन्यासों में लगाने शुरू किए। उन्होंने वो रसायन जो कि मुंह पर रुमाल लगा और बेहोश हो गए, वो खटका जो कि उन्होंने वहाँ से दबाया दीवार के साथ गई, ये सब जो है जो विज्ञान की खबरें आ रही थी उनका इस्तेमाल अपने उपन्यासों में किया। लेकिन विज्ञान का उपन्यास नहीं लिख सके, वो साइंस फिक्शन नहीं लिखा। लेकिन उनके सुपुत्र ने, दुर्गा प्रसाद खत्री उनके पुत्र थे, उन्होंने तमाम उपन्यास लिखे, लाल पंजा, स्वर्गपुरी, लोहे का आदमी। लोहे का आदमी उपन्यास में पूरा एक रोबोट का ही जिक्र है, सारा उपन्यास ही रोबोट पर है। तो उन्होंने बहुत उपन्यास लिखे दुर्गा प्रसाद खत्री ने। इसके अलावा उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे जो लोग, एक कहानी प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में ये हुआ कि भाई कहानी, कोई बढ़िया सी कहानी सब लोग जमा करो। तो ग्रेजुएशन में एक लड़का था जिसका नाम था यमुनादत्त वैष्णव अशोक, नैनीताल के रहने वाले थे। उन्होंने सोचा क्या लिखूं, इस बार कुछ अलग सी कहानी लिखी जाए। तो एक प्रोफेसर के बारे में वो कहानियां कहते थे, लड़के आपस में सारे स्टूडेंट्स बात करते थे। तो उन्होंने कहानी लिखी वैज्ञानिक की पत्नी, और वो बड़े व्यंग भी और हास्य भी और कहानी भी सब मिला करके। और उस प्रतियोगिता के जो निर्णायक थे वो थे जैनेन, दिग्गज साहित्यकार जैनेन। और पता लगा प्रथम पुरस्कार मिला वैज्ञानिक की पत्नी, ये 1936 की बात है। और जो ही पुरस्कार मिला तो ये हुआ कि अरे इस तरह की कहानियां लिखी जानी चाहिए। वो साइंस पढ़ रहे थे तो उन्होंने आगे कहानियां लिखनी शुरू की। उनके कम से कम 4-5 उपन्यास हैं, जो अन्न का आविष्कार है, हिम सुंदरी है और दृष्टदान है। इस तरह से उन्होंने आगे चल के कई उपन्यास लिखे। एक और डॉक्टर थे उस समय, डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र, जो आंखों के डॉक्टर थे, सीतापुर आई हॉस्पिटल बहुत प्रसिद्ध रहा है। वो उसके सबसे प्रमुख उन डॉक्टर्स में से थे जिनकी पूरी शिक्षा एक डॉक्टरी की हुई। उन्होंने उपन्यास लिखे, अधूरा आविष्कार और ये कहानी संकलन लिखा। उसके बाद मंगल यात्रा पर, शुक्र यात्रा पर, इस पर कुछ अनुवाद भी किए उन्होंने। और मुझे लगता है कि जो साइंस फिक्शन में जो कहानी को विज्ञान की जड़, बिल्कुल आधार, जिसकी नींव मजबूत की हिंदी में, वो डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र ने की। क्योंकि शुद्ध विज्ञान कथाएं उनकी हैं, बहुत ही अच्छी उनकी विज्ञान कथाएं। और उन्हीं के तीसरे साथी थे ब्रजमोहन गुप्त। ब्रजमोहन गुप्त जी की 2 किताबें आई और ये 30 के दशक की बातचीत उधर हो रही। इसके बाद आज़ादी आई, लेकिन एक उपन्यास बीच में हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आज़ादी से पहले का था, लेकिन आज फिर से वो प्रकाशित हो गया है और उस पर चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि उस उपन्यास को पहुंचना है अगली सदी में 2124 तक। ये महान साहित्यकार हमारे जो थे राहुल सानिकर्ता, उन्होंने लिखा था हमारे देश में कोई उपन्यास तब का, कोई भी कहानीकार, कोई भी उपन्यासकार भविष्य के समाज को सोच के तो नहीं लिखा था तब तक, केवल अतीत को सोच करके ही उपन्यास लिखे गए थे। ये पहली बार था जब राहुल सानिकर्ता ने भविष्य के समाज के बारे में सोचते हुए वो 1916 में सोचना शुरू किया और 1918 के बाद करते करते सोचते हुए उन्होंने इसको जो रूप दिया, 1924 में उपन्यास छपा जिसका नाम है 22वीं सदी। 22वीं सदी में जो समाज दिखाया गया है, क्या कल्पनाएं उनकी थी, उसमें जाति प्रथा खत्म हो चुकी है, उसमें वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं है, उसमें एशिया एक राष्ट्र बन चुका है, उसके बाद आगे चल करके भूमंडल एक राष्ट्र है और सेना खत्म हो चुकी है, सेनापति सेना कुछ नहीं है, पूरा विश्व एक नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। और ऐसी दुनिया, ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की। वो 22वीं सदी थी। हमें अगली सदी तक इंतजार करना होगा कि देखें कितना कुछ बदल जाता है तब तक। आज़ादी मिलते ही जो है हमारे यहाँ सबसे अधिक जो हिंदी में साइंस फिक्शन लिखा गया है और फैंटेसी लिखी गई है, फैंटेसी मॉडर्न, पौराणिक तो है ही, उससे तो हमारा वांग्मय भरा पड़ा है। लेकिन जो अब जिस तरह की फैंटेसी आज के साइंस को, आज के समाज को, आज की अंतरिक्ष यात्राओं को ध्यान में रख करके जो लिखा गया है, वो उस तरह का फैंटेसी और साइंस फिक्शन लेकर आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, जिसमें एक रमेश
वर्मा थे, रमेश वर्मा बहुत अच्छे कथाकार थे, दिनमान में लगातार कॉलम लिखा करते थे। रमेश शर्मा जी थे, उन्होंने हरा मानव जैसे लिखी। रमेश वर्मा की जो थी अंतरिक्ष के कीड़े, सिंधु ग्रह और कई उपन्यास लिखे उन्होंने। उसके बाद कैलाश शाह नाम से एक बहुत ही जाने माने जो है विज्ञान कथाकार बने, जिनकी पुस्तक की भूमिका, उनकी पुस्तक राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई और उसकी भूमिका मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी थी और उन्होंने साफ लिखा था उसमें कि हिंदी में विज्ञान कथाओं की, साइंस फिक्शन की बहुत कमी है और इस कमी को ये कहानियाँ पूरा करती हैं कुछ अर्थ में। उन्होंने पूरी भूमिका में समझाया हुआ है उस तरह से। कैलाश शाह के बाद जो है अपना जिक्र मैं क्या करूं, मेरी पहली उपन्यासिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में 1979 में प्रकाशित हुई थी, जिसको बहुत ही जोर शोर से उसमें छापा गया था। उसमें 20 बहुत ही शानदार चित्रों से उसको अलंकृत करके और सभ्यता की खोज नाम से वो उपन्यासिका प्रकाशित की गई थी। उसके बाद भविष्य नाम से एक और लंबी कहानी मेरी आगे प्रकाशित हुई, अन्य पत्रिकाओं में भी छपने लगे। तो ये हुआ कि विज्ञान कथाएं हमको लिखनी चाहिए। और उसी समय हमारे एक मित्र बम्बई में राजेश्वर गंगवार, उनकी कहानियाँ आनी शुरू हुई। और उसके बाद सुखदेव प्रसाद विज्ञान लेखक है, उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई। और उसी बीच डॉक्टर अरविंद मिश्रा नाम से वो मछलियों पर शोध कर रहे थे और उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा और बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी। हाल ही में उनकी कहानियों का एक संकलन अनुदित होकर के अंग्रेजी में आ गया है, स्पेस कुकू एंड अदर स्टोरीज, अमेजोन पर उपलब्ध है। ये हिंदी में पहली बार किसी साइंस फिक्शन का अनुवाद हमने देखा। इसके अलावा बाद में कई एक लोगों ने कहानियाँ लिखी साइंस फिक्शन, कल्पना कुल श्रेष्ठ हैं, प्रज्ञा गौतम हैं, इसके अलावा जीशान हैदर जैदी हैं, जाकिर अली रजनीस हैं और मनीष मोहन गोरे हैं। इस तरह बहुत नाम हैं जो कि लगातार लिख रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं वो। एक थोड़ा सा परिवर्तन और हुआ। सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जो मूल धारा जो है, जो मुख्य धारा है साहित्य की, उसके भी कुछ लेखकों ने विज्ञान को आधार बना करके अपने उपन्यास लिखे, जिनमें से एक बहुत मोटा बड़ा उपन्यास संजीव का है, रह गई दिशाएं इसी पार। वो सारा बायोलॉजिकल प्रयोगों पर है और बहुत ही अद्भुत उपन्यास है। उसके बाद उन्होंने फांस लिखा, जो विदर्भ में रह करके और सारा सर्वे करके 3-3.5 साल वो वहाँ रहे और उसके बाद किसानों से, घरों में और सबसे मिल करके उन्होंने जेनेटिक क्रॉप्स से, जेनेटिक मैनिपुलेशन जो है उससे क्या प्रभाव पड़ा है, इसको आधार बना करके फांस उपन्यास उन्होंने लिखा। जिक्र उनका अहेर में भी है उनके उपन्यास में, लेकिन ये 2 मुख्य उपन्यास हैं। मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी ने उपन्यास लिखा, जो कि पूरा विकिरण पर है। पूरा विकिरण के क्या नुकसान कैसे हो सकते हैं, वो आदिवासियों की समस्या और उस पर आधारित उपन्यास है पूरा। डॉक्टर रमेश उपाध्याय ने बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी हैं। कम लोगों को शायद मालूम हो कि उनकी विज्ञान कथाएं बहुत ही अच्छी है। मौसम की भविष्यवाणी एक बहुत शानदार कहानी उनकी है, पिछले साल वो विदा हो गए। उससे पहले, ठीक पहले उन्होंने एक कहानी लिखी थी, पागलों ने दुनिया बदल दी। इतनी अद्भुत कहानी है, रूपक कथा है वो सारा साइंस उसके भीतर मौजूद है। इसके अलावा बाल साहित्य में कई लोग बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। एक हिंदी के जाने माने कथाकार हैं सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह के कम से कम 4 उपन्यास, बाल उपन्यास आ चुके हैं। हाल ही में उनका कौतुक ऐप नाम से एक उपन्यास आया है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत शानदार। एक समीर गांगुली नाम से हैं, बम्बई में है। बीच में वो खो से गए थे, लेकिन अचानक वो तेजी से धूमकेतु की तरह से आए और तमाम बाल साहित्य की रचना कर रहे हैं। उनके कुछ उपन्यास आए हैं बहुत अच्छे। अभी 2 उपन्यास उनके प्रकाशन विभाग से भी प्रकाशित हो रहे हैं और एक पुस्तक उनकी नेशनल बुक ट्रस्ट से आने वाली है। वो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुरेश उनियाल जी ने बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ और विज्ञान कथाएं लिखी हैं। सुरेश उनियाल जी का इसमें काफ़ी योगदान है। और एक इन दिनों जो बहुत लिख रही वंदना देव शुक्ला, वंदना देव शुक्ला की बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। अभी एक उनका उपन्यास पढ़ा मैंने जो कि किंडल पर है, उसका नाम है भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा का इतना शानदार उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि एक मुकम्मल जो है साइंस फिक्शन, बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है।
इस तरह से हिंदी के जो मुख्य धारा के लेखक हैं वो भी धीरे धीरे साहित्य के साथ साथ विज्ञान कथा साहित्य भी रच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सच तो ये है साथियों कि कल विज्ञान कथाओं का युग होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप इतना विज्ञान से घिर चुके होंगे। आज आप में से हर किसी के जेब में एक मोबाइल घूम रहा है, आपका किचन में न जाने कितने गैजेट्स उसके हैं, टेलीविजन, कंप्यूटर, टैब, म्यूजिक, जाने क्या क्या कितनी सारी चीज़ें हैं। आप कहाँ बचेंगे? जो इससे एकांत हो रहा है, जो बच्चे धीरे धीरे आइसोलेट हो रहे हैं, जो पति पत्नी के बीच की दूरी पड़ रही है, जो दादा दादी नाना नानी जो है वो किनारे पड़ रहे हैं, इस पर कौन लिखेगा? अपने आप साइंस आएगा, साइंस फिक्शन इसलिए हिंदी में और अच्छा लिखा जाएगा। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि और किसमें असमिया भाषा में मुझे पहली बार सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारा इतना परिचय नहीं था कहीं। असमी भाषा में इतना खूबसूरत जो है साइंस फिक्शन लिखा गया है, और लोगों ने एकजुट होकर सारे लोगों ने एकजुट होकर के कैसे इसको सब लिखा, और कैसे उन्होंने आर्थर क्लार्क और आइजैक असिमोव और इन सबको अनुवाद किया असमिया भाषा में, और उसके बाद मौलिक साहित्य रचना शुरू किया। उनके यहाँ जबकि 1937 में जाकर पहला उपन्यास बेसारा तियार देश, ये पहला जो है हरिप्रसाद बरुआ का उपन्यास माना जाता है, तो तब लिखा गया था 1937 में लेके। और उसके बाद आज़ादी के बाद से लेके विजय कृष्णदेव शर्मा, चंद्रलोक को प्रथम मनन, शांतनु तांबले, दिनेश चंद्र गोस्वामी, नरकांत बरुआ, बंदिता फुटकन, अभिजीत शर्मा बरुआ, राजू हजारिका, और हमारे साथ जो रत्ना तामुली जी आई होंगी वो मौजूद थे। और इसके अलावा जो था, जो ओडिया में जो है कमलाकांत जेना जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। बहुत जानकारी ओडिया के बारे में हमें नहीं है, लेकिन अब चूँकि स्रोत एक संदर्भ मिल गए हैं तो इसलिए हमें उसके बारे में भी बहुत अच्छा लगेगा कि ओडिया साइंस फिक्शन के बारे में हमें बताएंगे। उनकी गवारे गवारे विज्ञान और कथारे कथारे विज्ञान, इस तरह की पुस्तकें लिख करके उन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया है साइंस को। अभी बीच में मैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम दे रहा था केरल में, और मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरे केरल में और सारे महाविद्यालय जितने जुड़े हुए थे आपस में, उसमें एर्नाकुलम से हो रहा था, और उन्होंने इतनी ज़्यादा रुचि जाहिर की कि हिंदी में विज्ञान कथा साहित्य था। न जाने कितने शोधार्थियों ने फ़ोन किया कि हम इस विषय पर शोध करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा मलयालम के बारे में मुझे खुद पता नहीं है। तो वहाँ से जो जानकारी मुझे मिली मलयालम की, उसमें पता लगा कि पहला उपन्यास जो संदर्भ देते हैं 1893 का देते हैं कि द्वारका लिखा गया था। हो सकता है द्वारका वही हो जो हम कृष्ण की नगरी के रूप में मान के चलते हैं, शायद हमारी पौराणिक कल्पनाओं की तरह से वो भी वहाँ शायद कल्पना हो। लेकिन उसके बाद 1984, 100 साल बाद 1984 में सी राधाकृष्णन ने मरीचिका लिखा। 1997 में भी KN उन्होंने ऑटोमेशन और गुरुत्वाकर्षण पर लिखा। 1996 में थॉमस जोसेफ नक्षत्र पुंज लिखा, और 2001 में वैशाखन ने होमो सेपियम 2 ये लिखा। और प्रोफेसर शिवादास को मैं नहीं भूल सकता, वो मलयालम और अंग्रेजी में लिखते हैं। उनका एक जगह व्याख्यान सुनने का मौका मिला। वो यूरेका पत्रिका के संपादक रहे, जिंदगी भर वो केमिस्ट्री पढ़ाते रहे और लिखते रहे, और इतने खूबसूरत उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। उन्होंने एक बात कही थी जो आपको बहुत, मैं बताना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इफ साइंस इज डिफिकल्ट चेंज इट टू लिटरेचर। इतनी जोरदार बात थी, मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं अनजाने में ये सारा काम कर रहा था कि विविध विधाओं में साहित्य की विज्ञान को केवल लेख, सूचनात्मक लेख लिखने के बजाय कथा, कहानी, गीत, कविता, नाटक, साक्षात्कार, पत्र शैली में और डायरी के रूप में इन सब पे काम कर रहे थे। और उन्होंने फिर ये एक मंत्र दिया बहुत अच्छा कि साइंस इज डिफिकल्ट चेंज इनटू लिटरेचर। इस तरह से मलयालम के ये मुझे पता लगा। तमिल के हमारे बीच इरा नटरासन साहब आए होंगे, उनको प्रणाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत साहित्य रचा है, और वो शायद हम लोगों के बीच अकेले ऐसे साहित्य इन भारतीय भाषाओं में जो फैंटेसी और साइंस फिक्शन में
जिनका उपनाम ही जो है इधर नटराजन की जगह पर आयशा नटराजन पड़ गया, क्योंकि आयशा उनका जो नोवेला है वो लाखों की तादाद में बिका है। 12 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। वो यहाँ मौजूद हैं और वो तामिल के बारे में बहुत कुछ हमें बताएंगे। हमने तो केवल सुजाता का नाम सुना था, वो भी कुछ फिल्मों के माध्यम से उस तरह से। एक जगह कहीं मुत्थू मिले हुए थे, उन्होंने भी कुछ बताया। कुछ अन्य नई पीढ़ी के लोग होंगे तो इन भाषाओं का भी हमें अभी ज्ञान अर्जित करना है। कन्नड़ में मुलाकात हुई थी मेरी राजशेखर भूसनूर मठ, अब वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने मनवंतर और अटलांटिस नाम से 2 उपन्यास लिखे थे। उसके अलावा वहाँ V.K. बनाकर, संतोष कुमार मेहंडले और H.S. मेरांटी, इन लोगों ने भी साइंस फिक्शन लिखा। अंत में आता है पंजाब। पंजाब के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि साइंस फिक्शन पंजाबी में कहाँ लिख रहे होंगे, क्योंकि कभी पढ़ने को तो मिला ही नहीं। लेकिन एक बार मुझे रमा रतन जी मिली। उनका बेटा डॉक्टर रवि रतन जो है वो नॉर्वे या किसी देश में बताया कि वहाँ जेरेंटोलॉजी में जो वृद्धावस्था क्यों आती है, इस पर साइंटिस्ट वो खोज कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चों का उपन्यास लिखा। वो शीर्षक कभी भूल ही नहीं पाता, वो एकदम दिल में बैठ जाता है। बच्चा पूछता है, बाबा किथे गए? कल तक बाबा थे घर में, आ रहे थे जा रहे थे, वो बाबा है ही, बाबा गए। तो बच्चा पूछता है, बाबा किथे? तो उन्होंने पूरी स्टोरी किस तरह से एक बच्चे को, कैसे जन्म होता है बच्चे का, कैसे बच्चा बड़ा होता है, कैसे वो फिर दादा बन जाता है और फिर एक दिन दुनिया से चला जाता है। इस पूरी कहानी को उन्होंने, बड़ी मार्मिक कहानी, इसको उन्होंने अपनी उस कृति में स्पष्ट किया है। वहाँ अमनदीप सिंह टूटे तारियों की दास्तान, सुखंत कौर मान का है सोने का रूख, सोने का पेड़। कर्नल जसबीर गुल्लर ने जंगल टापू, जहाँ पर पेड़ पौधों की, जंगली जीवों की कहानियाँ पूरी लिखी। डॉक्टर अमरजीत सिंह कन्नड़ा में उन्होंने चिप के अंदर, चिप के भीतर, वो एक मजेदार उपन्यास उन्होंने उस पर लिखा। तो इस तरह से ये भारतीय भाषाओं का जो अन्य भाषाएं हैं इनकी बात हो गई। अब मुख्य रहता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में हमारे बीच रजत चौधरी साहब हैं, वो हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। और संस्कृत में जनार्दन हेगड़े साहब हैं, उनको आप दोनों को प्रणाम करता हूँ और हमारा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य में तो मैंने बताया विपुल फैंटेसी साहित्य उपलब्ध है। और इसके साथ ही मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा ऐसा हम लोगों को मतलब ऐसा लगा होगा कि ये भी कोई क्षेत्र है, और मैं बार बार चौंक कर देखता हूँ कि साहित्य अकादमी ने ये विषय कैसे रखा, और खुद ही अपनी पीठ थपथपाता हूँ कि हमारा भी शायद वक्त आ रहा है, हम लोगों का वक्त आ गया है जहाँ साइंस और साहित्य में फर्क नहीं माना जाएगा, साथ साथ पढ़ सकेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये तमाम सूचनाएं थी। पूरी भारतीय भाषाओं को अपने वक्तव्य में जगह दी। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ इस सत्र के लिए। हम अब अगला विचार सत्र शुरू करेंगे। इसके बीच में हम एक 2 मिनट का अंतराल लेंगे जिसमें हम मंच सज्जा परिवर्तित करेंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि हमको मंच में बदलाव में मदद करें। सर, इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद आजुर्दा साहब, और इस सत्र में हमारे बीच में कमलाकांत मीना जी ओडिया भाषा से, अंग्रेजी भाषा से रजत चौधरी जी, संस्कृत से जनार्दन हेगड़े जी, मराठी से जोसेफ पुस्कानो जी और तमिल से ईरा नटराजन जी होंगे। रत्ना तमोली जी को होना था, लेकिन उनके परिवार में एक Thank you.
बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा साहब को आमंत्रित करता हूँ इस सत्र की अध्यक्षता के लिए। और इस सत्र में हमारे साथ हैं कमलाकांत जेना जी, रजत चौधरी जी, जनार्दन हेगड़े, जोसेफ तुस्कानो, ईरा नटरासन जी। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आप सभी का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत ही स्वागत है। बहुत ही संक्षेप में मैं आप सबका परिचय करवा देता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा प्रतिष्ठित कश्मीरी और उर्दू लेखक हैं। आपने निबंधकार के रूप में अपनी एक स्थायी पहचान बनाई है। आप कहानियाँ, जीवनी, बाल साहित्य के लेखन के अलावा अनुवाद भी करते हैं। एक प्रख्यात समालोचक के रूप में कश्मीरी भाषा और उर्दू में आपकी समान रूप से प्रतिष्ठा है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं मिर्ज़ा सलामत, अली दबीर, मौजे नकद, गुबारे कारवां आदि। आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, फखरुद्दीन अली अहमद गालिब मेमोरियल अवार्ड, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस अवार्ड तथा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जैसे कई सम्मान। आप कश्मीर विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन और उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ मोहम्मद जमान आजुर्दा साहब का। हमारे बीच में रजत चौधरी जी हैं, जो अंग्रेजी और बांग्ला के द्विभाषी लेखक, कवि, अनुवादक तथा पर्यावरणविद हैं। आपके उपन्यास द बटरफ्लाई इफेक्ट को दुनिया भर की पर्यावरणीय साहित्य पर केंद्रित 10 प्रमुख कृतियों में सूचीबद्ध किया गया। आप द बेस्ट एशियन स्पेक्युलेटिव फिक्शन कलेक्शन के संपादक तथा कई अन्य संकलनों के सह संपादक हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित क्लाइमेट फिक्शन वीडियो गेम में आपकी लघु कथा प्रदर्शित हुई। आपको चार्ल्स वेलेस फेलोशिप तथा कई अन्य सम्मान प्राप्त हैं। आपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य स्थानों पर व्याख्यान दिए हैं। हम रजत चौधरी जी का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोसेफ तुस्कानो प्रख्यात लेखक और विद्वान हैं। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, कृपया 1 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए प्लीज। श्री जोसेफ तुस्कानो प्रख्यात लेखक और विद्वान हैं। आपने विज्ञान और पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण, वस्त्र उद्योग, विज्ञान कथा तथा विविध साहित्यिक विषयों पर अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। मुंबई में 2 वस्त्र उद्योग संस्थानों में अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने के बाद आपने 30 वर्ष तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्य किया और प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति आप महाराष्ट्र सरकार के लिए विश्व कोश निर्माण से संबद्ध हैं और रॉयल्टी फॉर रिटायर्ड के सदस्य भी हैं। हम जोसेफ सर जी का भी बहुत स्वागत करते हैं। श्री कमलाकांत जेना एक चर्चित विज्ञान कथाकार हैं। अभी आप भद्रक महाविद्यालय ओडिशा में भौतिक विज्ञान के सहायक प्राध्यापक हैं। लोकप्रिय विज्ञान पर 200 से अधिक लेख के अलावा आपकी 14 पुस्तकें, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 18 पाठ्य पुस्तकें तथा अंतरिक्ष, जीवन और कल्पना पर केंद्रित एक उपन्यास आपका प्रकाशित है। आपके अनेक वैज्ञानिक संवाद ऑल इंडिया रेडियो द्वारा तथा परिचर्चाएं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होते रहे हैं। आपको प्रकृति बंधु सम्मान, पीके परिजा सम्मान, पीके परिजा विज्ञान सम्मान, गुरु गौरव सम्मान, पारसमणि सम्मान, सरागाशि सम्मान तथा कई अन्य पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम कमलाकांत जेना जी का बहुत स्वागत करते हैं। प्रोफेसर जनार्दन हेगड़े संस्कृत के प्रख्यात विद्वान लेखक हैं। आप कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दक्ष हैं। आपको सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात द्वारा वर्ष 2014 में डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आपने संस्कृत व्याकरण, संस्कृत में सृजनात्मक लेखन के अलावा कन्नड़ उपन्यासों का संस्कृत में अनुवाद किया है। आपकी प्रमुख कृतियों में धर्मश्री के अनुवाद तथा बाल कथा सप्तक सहित कई कृतियां शामिल हैं। आप संस्कृत मासिक संभाषण संदेश के संपादक हैं। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जैसे अनेक अलंकरण से नवाजा जा चुका है। हम प्रोफेसर जनार्दन हेगड़े जी का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ईरा नटरासन शिक्षाविद, प्रख्यात बाल कथाकार, अनुवादक, विज्ञान कथाकार तथा आलोचक हैं। आपने भौतिकी, मनोविज्ञान एवं शिक्षा प्रबंधन में स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं। आपकी 100 से अधिक पुस्तकें तमिल तथा अंग्रेजी में विज्ञान एवं विज्ञान कथा साहित्य पर 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं।
आपकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: मालर अलजेब्रा, यूरेका कोड, लखनऊ, अरिबियल देशम, आयशा, विज्ञानम विक्रमादित्यम, साइंस कैवलरी इन तमिल आदि। आप तमिल और अंग्रेजी पत्रिकाओं में नियमित स्तंभ लेखन करते हैं तथा दूरदर्शन के अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। आपको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, विकातन विरुद्ध, इलक्किया सिंधालई विरुद्ध, डॉक्टर अब्दुल कलाम अरिबियन इलक्किया विरुद्ध आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। संप्रति आप कृष्णास्वामी मेमोरियल मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडलोर के प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम ईरा नटराजन जी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब ये सत्र आदरणीय प्रोफेसर जमान आजुद्दा साहब के हवाले है। वे क्रम से रचनाकारों को आमंत्रित करेंगे। मैं सभी रचनाकारों से अनुरोध करूंगा कि वे 7 से 10 मिनट के बीच में अपने बात को रखें। Hello, check. मोहतरमी धर्मेंद्र तिवारी जी, जनाब अनुपम तिवारी जी राव जी दूसरे सेशन में चले गए और माई फेलो राइटर्स जो मेरे साथ बैठे हैं और जो मेरे सामने ही मेरा काम बहुत आसान कर दिया। पहले तो राव जी ने he just gave us a very good lesson on what science fiction and what fantasy और कहाँ से शुरू हुआ और क्या। उसके बाद जो तिवारी जी बोले सारी तारीफ उसमें आ गई और किस लैंग्वेज में क्या हो रहा है और हम किस स्टेज पर हैं, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। और तिवारी जी ने जिस तरह से हमारे मित्रों का तारुफ कराया उससे काम और आसान हो गया। अब मेरा काम फिलहाल ये है फॉर द टाइम बीइंग कि मैं अपने दोस्तों को क्या कहते हैं हिंदी में आमंत्रित करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो आकर के अपना वक्तव्य या अपने ख्यालात, अपने थॉट्स को पेश करें, अपनी ऑब्जर्वेशंस दे दें और अपने कारनामों का भी थोड़ा सा जिक्र करें। तारीख को कम से बहुत हो गई, तारीख थोड़ा जोग्राफी से कम। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब कमलाकांत जैना से जो उड़िया लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं। उड़ीसा से मेरे बहुत पुराने मरासिम हैं। सबसे पहले मैंने मनोज दास को ट्रांसलेट किया है और मेरी खुशबख्ती है प्रतिभा राय, सीताकांत महापात्र, हंसता, ऐसे लोग हमारे यहाँ आए हैं, उनके साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ टाइम शेयर किया है, उन लोगों के साथ मैंने काम किया है। द्वारा हरी आज आने वाले होंगे तो मुझे बड़ी मसरत है कि हम ये उड़िया से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही फकीर मोहम्मद का नाम आया था ऊपर जब बंगलादेश उड़िया की बात हो रही थी। चला समस्त को नमस्कार। ओडिशार समस्त को जगन्नाथ आशीर्वाद। कमलाकांत जेना, ओडिशा। Esteemed Secretary Rao sir, esteemed Chairman, esteemed my Symposium partners, and esteemed you all who are the science lovers. Couple of minutes before there was a discussion that there is no difference between literature and science. True, a big yes. Science modifies your culture. Literature explains your culture. So science gives you truth. You literature people, science give you truth. After 2008, you cannot say that there is no water on the surface of moon,
because Chandrayaan has proved that the surface of moon regolith contains hydroxyl molecule. Therefore, the literature people, now you are aware that the moon is not a dry land. It is having water. So that is the truth you get from science and modify your creation. So there is a relation between science and creation. Okay. The topic is fantasy and science fiction in Odia language after independence. Fiction and fantasy are grounded into a common principle. What is that principle? That is non-truth. We say both are similar, same, but really there is a great difference between fiction and fantasy. Fiction is not basically strictly a fact or a history. Rather, it is based on fact or history, or it is basically imagination. Fiction is basically imagination. Maybe that is feasible, but we find that fiction in our stories, in our drama, in our novel, in our novella, that is fiction. But in the same fashion, fantasy is also not reality. It is based on not on fact or history, rather it is based on magic and supernatural elements. That is, you can say in other words, fantasy may be a highly modified fiction with high creativity. That is fantasy. So, for example, if I say this is fantasy, then practically you can say fantasy is usually ordinarily not feasible, whereas fiction is feasible. For example, we are talking of alien, we are talking of spaceship, whatever we are talking, we have created, we have invented, we have discovered them, and in future it can be feasible. But fantasy dragon, some ugly man, that may be not feasible for this structure, this infrastructure. I can say the fantasy may not be feasible nowadays, but your fiction may be feasible. So that is called kahani, it is adbhut. So this is the basic definition, difference between fiction and fantasy. As far as our Odia literature is considered, we have many books. Before independence, we had some magazines. I can call them names: the Prabodha Chandrika, Utkal Darpana, Utkal Madhupa, Vigyan Darpana, Utkal Sahitya, Barani, Mukura, a few others. They were the magazines in Odia. They had fetched the space to the science writers to write some science articles. What was the motive of that writing? That was the motive to extract the social, the philosophical, the social aspects of the science. And I am sorry to say that a great work was not done on science or science fiction and that to fantasy before independence. And after that, actually, after independence, so to say 1950s, Professor Gokulananda Mahapatra started writing the fiction and fantasy. The first book is considered till now, the first book of our Odia literature is Man Beyond Earth, Prithvi Bahare Manisha. That was the first literature created in 1952, where he showed that man can go beyond the earth, and with basic knowledge, he could describe very lucidly the life beyond the earth. And other creations of the same author were the artificial satellite, the flying disc, the death of moon, and the fourth dimension, Chaturtha Parisara. That were the creations of Gokulananda Mahapatra. And other creations after independence, I can say, the authors are Vinod Kanungo, Pulamani Samal, Santanu Kumar Acharya, Nikhananda Panigrahi, Ramesh Chandra Parida, Pramod Kumar Mahapatra, Kamalakanjana Mean, and Himanshu Singh, and a few. And no doubt Odia literature has many short stories, many fiction stories. As far as the book is considered, there is a few number of upanyas or novel, but as far as the short story is considered, there are many. So I can say, just like Star Wars, the alien eye, men from Mars talking to different world, visitor from Deathland, life in space, and many more. There are many science short stories in Odisha, in Odia literature. Till now, they are also growing.
the number is also growing. And basically they are published in Vigyan Diganta, published by Odisha Vigyan Academy, Science Horizon, published by Vigyan Academy, and others, Vigyan Prachar Samiti, Vigyan Loko, etc. They are published in those magazines nowadays. Yes, it is a matter of grief again that we have, in Odia literature, we have a few science communicators, and out of them, a few are motivated to create fantasy and fiction. It is because it is not an easy thing to go for fantasy and fiction. And in fantasy and fiction, I can call the names of those dedicated writers: Nityananda Swai, Prahlada Nayak, Pramod Mahapatra, Kamalakanta Jena, Somendra Ghosh, Mayadhar Swai, Arun Saul, Ramchandra Deo, Jyotirmoy Mahanti, Surendranath Saul, Subrat Mahapatra, Devashish Chakravarti, Tulasi Swai, and others. Okay. In Odia, most of the science fiction they describe the travel to Mars, the travel to moons, the travel to other planets beyond our solar system, that is called exoplanet, and they also describe the robotic techniques in our Odia, and I have written the alien rahasa. Alien rahasa means the laugh of the alien, where the alien does not know how to laugh. They are very busy in technology, so they do not know how to laugh. Finally, the hero makes her laugh. The heroine makes her laugh, and that is alien rahasa. So there are many things. So because the time is a constraint. So Einstein once said, we do not know time. We do not know the definition of the time, but time is very important. From Einstein, we know the time. If you say, where from the time starts, where from it? So if you go back to 1370 crore years back, for the universe created, then only the time created. Time is created. So if you ask what was before the universe, then I am undone, because the time starts from where the creation starts. So time was not there before the universe. So time is very important. So within a couple of minutes, I will come to my conclusion. Yes, it is rightly said, if the science is difficult, change it into the literature. Thank you, Devendra sir. Okay, when the science is difficult, really the science is difficult. It is not an easy thing to understand the science and convert it into the literature. That is difficult. So fiction and fantasy are the best means to popularize science. If Kendra Academy or Society Academy, they are trying to popularize science with such a wonderful topic, wonderful symposium, then they should know that science is not an easy thing to popularize. But it can be popularized, as Manoj sir knows, it can be popularized that it should be written in terms of fiction or fantasy that will touch the heart of the reader. When you are trying to touch the brain of the reader, it is not fruitful. If you touch the heart of the reader, then it is fruitful. So fantasy and fiction are the elements that can pierce into the heart of the reader, and that will be memorized. So I can again say the writing science for common people, and that too, fiction and fantasy is not a easy art, because it needs deep understanding of science and as well the good command in literature, so that you can touch the heart of the reader. And that is why this is a prime factor. That is why the people, the communicators are not diverted towards creating the fiction and fantasy. It is the duty of Kendra Academy and duty of State Academy to have some major and minor projects and lucrative incentives and workshop on science writing. Especially in each year, you should have a special workshop for fiction and fantasy writing. Thank you all. Namaskar. बहुत अच्छा, very good, very interesting, very good. Hello, Chief. ये थे हमारे जिन्होंने ओडिया में और फिर ओवरऑल ये प्रोसेस साइंस फिक्शन के बीच में जो रिलेशन है एंड हाउ इट गोस बड़ी सारी बातें कही और शायद रिफ्लेक्शन हो ये क्या जो लास्ट में तो समाप्त करेंगे मैं अभी
हमारे रजत चौधरी अंग्रेजी के कि थोड़ा सा यानी उनसे बच गए अपने बारे में Thank you, Chairperson, sir, distinguished guests and beloved audience. I have a paper presentation and I'll try to stick to 10 minutes, but it might go a little above 10. I must begin with the caveat that I am not a theoretician of science fiction or fantasy, but someone who has written a book of what you may call sci-fi and edited a volume or two of what some of us, with a bit of difficulty, may try to shoehorn into the category of speculative fiction. We will return to the speculative shortly, but let us make an attempt to understand the title of this symposium. By examining fantasy, science fiction, Indian languages and the cutoff year 1947, we will essentially be demonstrating the need and ongoing efforts to expand the literary categories, while also focusing on the connection between political independence and the birth of a new genre. This will then help us argue for the necessity, importance and nuances of new kinds of speculative stories that are being told by Indians today. In advocating for these narratives, I might unwittingly bring in a bit of my eco-activist bias, but I will try my best to give the critic precedence. The borderlines between fantasy and science fiction, as many of our guests have already discussed, the borderlines between fantasy and science fiction have always been fluid and contested. Still, theorists like Darko Sobin, Isvan Sixeri-Rone Jr. and others have given us pointers that eased our understanding about what is and what is not science fiction. Science fiction, or SF, stands on so-called novums, a novelty, a new reality or thing which creates cognitive estrangement, difficulty in cognition, estrangement of cognition. But the rules of this new, the novum, are consistent within the framework of an imagined science. Science fiction also displays the use of neologisms, oxymorons, sublime chromatopes, among other defining characteristics of, or what has been called the beauties of science fiction. Fantasy, on the while debates around genre versus literary fiction are fraught with the problematic legacy of the artificial nature-culture divide, the growing variety of narratives and the pressure of ecological breakdown have created the need for super-categories and new genres. These, while allied to science fiction and fantasy, can often better represent this creative field of imaginative storytelling and the diversity of its storytellers, while also allowing readers to better engage with the unprecedented changes of our times. This is how supercategories like speculative fiction in its most popular meaning and climate fiction comes into the picture. For the rest of my presentation, I will try to share my experience as a theatre practitioner, editor and critic of this new writing from India, which are the windows through which I engage with science fiction and fantasy. The title of this symposium mentions Indian languages, and recent anthologies, including ours, have had a definite Asian, if not Indian, focus. But is there a distinctiveness about Indian science fiction beyond the obvious? There has been several excellent attempts, both academic and popular, to characterize, categorize, analyze or write brief histories of Indian or South Asian science fiction by people like Sami Ahmad Khan, Sukarno Banerjee, Sheta Taneja, Anil Menon, Mimi Mondol and many others. For reasons alluded to earlier and because it's beyond the scope of this short talk, we will avoid the survey or analytical approach and instead remain focused on some of the new directions of Indian science fiction, or rather speculative writing, where the environmental, the political and the literary come into play. We all know that the word speculative applied in the context of fiction came into currency sometime in the middle of the last century. Speculative fiction's road has been rocky recently as it laid claim to the mantle of serious science fiction, and with influences of the Mundane Manifesto and helped by Margaret Atwood, further laid claim to plausibility compared to science fiction's talking squids in outer space. However, in the contemporary and what is among the most generous definitions, speculative fiction not only includes science fiction and fantasy,
but much more. The speculative today, and here I am referring to my own introduction to the best Asian speculative fiction anthology, is described as a field of cultural production and is characterized as a super genre which, beyond the big three of science fiction, fantasy and horror, includes several other types of writing. As Marek Ozewicz writes, it in fact opens up the space for the voice of minorities and ethnic others within non-mimetic narrative forms without relegating them to the ghetto of ethnic literatures. Elsewhere, Shami Ahmad Khan, while analyzing Indian science fiction in English through the lens of ideology, has shown how the other is built in and by the text in gendered, civilizational or social constructs. Gendered as in women, LGBTQ, civilization as Islam, communism, these others, social as in caste, class and things like that. The focus on these others, the minority, the excluded, gives a solid raison d'être for science fiction, or more correctly, speculative fiction being written in a multi-ethnic, multi-religious, post-colonial nation like ours. This is very important. Indeed, many writers are writing these what-if stories of speculation, touching upon issues of social breakdown, techno-utopia, dystopia, surveillance, authoritarianism, scarcities and more set in dystopian near futures. While easily placed in the broad field of speculative fiction, many of these stories also have science fiction novums, the novelty, in the form of new technologies, gene splicing, singularity, quantum computing, AI, sky drones, and so on. In this context, think of Shamik Basu, Manjula Padmanabhan, Praya Akbar, Lopa Ghosh, Payal Dhar, Lavanya Lakshminarayan, and so on, so many others. Though the origins of Indian SF travels more than a century before independence, that we are focusing here on the post-independence period serves us well. Decolonization of science fiction is a tall order, but we remember how Satyajit Ray named the cat of his very famous scientist, Professor Shonku. He named the cat Newton. That is, it was a kind of, a humorous kind of attempt to decolonize science fiction. SF theorist Bodhisattva Chattopadhyay mentions the period of the 1960s is when Kalpabigyan or science fiction begins to take shape in all the major language groups of India. Similarly, Suparna Banerjee's work about periods and narrative elements of Indian SF calls the 1947-95 period the golden age of Indian SF science fiction. Political economic independence is also interesting for our purpose as it intensified forces of exploitation and the othering of nature that aggravated climate change and ecological collapse, propelling new speculative genres like climate fiction, which often share a kinship with science fiction. Amitav Ghosh has analyzed how colonization, through forced backwardness and exploitation, may have paradoxically delayed the onset of the climate crisis. It took time for literature to respond to these changes, but right now, more and more stories about climate and ecological breakdown are being written by Vandana Singh, S.B. Divya, Praya Akbar and others, which employ elements of science fiction and often have one or more distinct novels. We often hear a debate surrounding the status of climate fiction as science fiction. Some critics hold the view that climate fiction is indeed science fiction because of its novum, which is in this case manifested through unprecedented disasters. Karen R., however, argues that science fiction proper has often been concerned with either extrapolating technological development from existing social conditions, while climate fiction, especially of the present post-apocalyptic type, often assumes that the turning point for change occurred before our historical moment. So there's this debate there. Let me turn to my own experience as editor and writer. A few years back, the well-known fantasist Sheta Taneja submitted to me a darkly humorous story for our Kitab anthology of speculative fiction, which was later a finalist for a major international prize. This story, titled The Daughter That Bleeds, it was a short story of a post-apocalyptic India where fertile women who have become rare after the bio-wars are sold or auctioned. So we have the gendered other here and a novum consisting of the unprecedented and severe damage to reproductive health by bioweapons. Such stories have an uncanny resonance in the pandemic-inflicted present.
Whether SARS-CoV-2 spread from a lab with disregard for biosafety levels, or it is an indicator of a reckless disregard for our entanglement with the living planet, we can hardly ignore science fiction of this type that reminds us of our connections with humans, other beings, and the planet. In my own novel Butterfly Effect, which has been labeled both as biopunk and sci-fi by researchers, climate change is an active backdrop of a science fiction-like plot where the novum, according to sci-fi researcher Samyam Khan, is gene splicing of humans and plants. Because of its transnational but environmentally connected settings, I suppose this novel to be science fiction with a sense of planet where climate change and environmental disaster play a significant role. Quite a few scenes in Amitav Ghosh's climate novel Gun Island are pervaded by the climate uncanny, and its plot involves ghosts and unexplained events, drawing it towards the stable of fun fantasy but with a very solid scientific core. We can definitely call this work a kind of realist hybrid where current events have precedence but the invisible or the unimaginable is never far. Another kind of new writing coming from the sci-fi speculative genre has been engaging with climate change and ecological collapse with a measure of hope. And for this I will again return to Taneja for an example. We have recently published an anthology of solar punk stories themed multi-species cities where science, activism and hopeful futures all find a place. In Taneja's story from that volume we find how dolphins teach human babies empathy in the backdrop of a climate-ravaged world. Priya Chapriya's lyrical tale in the same volume contrasts the fantastic world of a child who can hear nature speak with that of a grown-up dystopian future. In this context, S.B. Divya's engaging story, Things That Bend But Don't Break, about jackfruit batteries that appears in the Cities of Light Solar Futures anthology also comes to my mind. In S.B. Divya's and other such tales of the solar punk genre, we find a route to avoid or at least critique the apocalypse by narrating stories of incremental change towards better tomorrows and pathways for hopeful futures. It need not get bad till it gets better, these authors seem to say. Community action and a focus on human-centric sustainable technologies like renewables can still deliver us from evil. Empirical work by Matthew Schneider-Meyerson, Dennis Baden and others have demonstrated that climate fiction not only has an effect on beliefs and attitudes, positive stories about the environment inspire greater action and intentions to change behavior. In the final count, it does not really matter if these new stories are labeled sci-fi, fantasy, hope punk or just speculative fiction. Most of them are. But with a humane science and community action driving their plots, they do chart a roadmap of hope. It is a matter of assurance that many Indian writers of speculative fiction are beginning to tell these inspiring tales. Thank you. It was our beloved writer, Chaudhary, who not only talked about science fiction, but within science fiction. And then between that transition from fantasy to science fiction, how challenge it is, and how our children are going to get their future shaped with this thinking. And I think that he just talked about climate change also, and we'll be listening to something after that. But now, immediately I would like to request my Karnataka friend, Janardhan Hegdeji, who has come from Bangalore. See you. How's that? Please speak. रोमांच प्रधान जो साहित्य है इसका विपुलता है, लेकिन संस्कृत साहित्य में इस प्रकार का साहित्य तो मुश्किल का काम है, क्योंकि ये संस्कृत के लोग सारे देश में बिखरे हुए हैं। इसलिए कहाँ किस राज्य में क्या काम चल रहा है इसका विवरण का संग्रह भी मुश्किल ही है, और जो साहित्य कम है और विवरण का मुझे लगता है ज़्यादा काम नहीं हुआ है। मैं तो पत्रिका क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए पत्रिका क्षेत्र में क्या क्या चलता है और नए नए ग्रंथ जो प्रकाशित होते हैं उसके जानकारी मुझे स्वतंत्र रूप में जो फैंटेसी रोमांच प्रधान कथाएं और उपन्यास
वैसे विज्ञान के विषय के आधार पर उपन्यास लिखना बहुत कम ही लोग हैं। कुछ नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा साहित्य मुख्य रूप से वो अंग रूप से बहुत मिलते हैं, एक भाग के रूप में मिलते हैं, लेकिन एक उपन्यास इसी विषय पर हो, एक कथा इसी विषय पर हो, ऐसे लिखने वाले बहुत कम हैं। तथा ऐसा राधा वल्लभ त्रिपाठी जी इन दिनों में एक उपन्यास लिखे हैं, वो प्रकाशित हो रहा है पत्रिका में, अच्छा उपन्यास है। और विज्ञान के बारे में ऋषिदेव जानी तो गुजरात के हैं, संस्कृत में एक उपन्यास लिखे हैं, बहुत अच्छे उपन्यास है, विज्ञान के आधार पर ही है। वो एक अंतरिक्ष के लिए जाते हैं, एक टीम जाता है, एक पहले जो अंतरिक्ष यान गया था वो गायब हो गया, उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। इससे कैसा कथा शुरू होती है और बीच में वो भारतीय साहित्य में जो विज्ञान है उसका भी उल्लेख करते करते बातचीत में वो उल्लेख करते हैं। ऐसे विषय बहुत ज़्यादा है, तो भी और शुद्ध विज्ञान के आधार पर ही ये विज्ञान साहित्य है। बहुत कथाएं, मैं कथाओं का कुछ नाम बता सकता हूँ, जालम, कोहंता, प्रतितंत्रम, भंडः मांत्रकः, सुयक्षिणी, 20 वर्ष अनंतरम, संपत्ति रक्षणम, ऐसे कुछ कथाएं, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये बहुत मिलते हैं। उपन्यास में उपन्यास के रूप से बहुत कम ही है। मृत्यु चंद्रमसा पर्वत, ये दो भी अनुवाद के रूप में है, लेकिन विज्ञान के आधार पर ही लिखे गए हैं। कथाएं कुछ चिराइस्क परियोजना, समय यंत्रम, वर्तमानम, अंतरिक्ष योद्धा, ये सब कुछ कथाएं भी हैं। ऐसे संस्कृत साहित्य में ये रोमांच प्रधान और वैज्ञानिक साहित्य, इसका बहुत ही कम है, ये मेरा अनुभव है। इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो लिखने वाले कम हैं और लिखना भी आसान नहीं है। समझिए, ये विषय है फैंटेसी और साइंस फिक्शन। आप सब इसी शब्द के उपयोग करके व्यवहार कर देते हैं, लेकिन संस्कृत क्षेत्र से मैं आया हूँ, मुझे तो इस विषय पर कुछ लिखना है तो पहले तो मुझे शब्द का सृजन करना पड़ेगा। फैंटेसी माने क्या है, इसलिए रोमांच प्रधान ऐसा मुझे कुछ करना है, ऐसा ही मैं कर नहीं सकता। और विज्ञान प्रधान, साइंस फिक्शन विज्ञान प्रधान, विज्ञान साहित्य ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए विज्ञान को संस्कृत भाषा में लिखना है तो शब्द का सृजन बहुत प्रमुख होता है। अगर मैं कुछ प्रयास से कुछ करूं, वो पढ़ने वाले जो है उसको समझना नहीं आता है, इसीलिए ये बहुत सारे कष्ट होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं लिखते, इसके बारे में लिखने वाले कम हैं। लेकिन जो फैंटेसी है, रोमांच प्रधान कथाएं बहुत आते हैं, कल्पना आधारित है, वो कुछ ज़्यादा है। लेकिन वैज्ञानिक साहित्य विशिष्य ये शब्द की सृष्टि की बात भी इसमें है, इसलिए अभिप्राय का प्रकाशन करना मुश्किल है, इसलिए कम लिखते हैं। लेकिन भाषा प्रचार की दृष्टि से मैं सोचता हूँ, ऐसे साहित्य आम आदमियों के रुचि बढ़ाते हैं, इसीलिए ऐसे साहित्य ज़्यादा हो तो ही भाषा का विकास होता है। संस्कृत क्षेत्र में हमें भाषा का विकास के बारे में ज़्यादा सोचना है, इसलिए इस दृष्टि से नए शब्द की सृष्टि हो सकती है, भाषा का प्रचार हो सकती है। इसलिए इस दोनों तरीके के रोमांच प्रधान और वैज्ञानिक साहित्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिखने वाले कम हैं। मैं समझता हूँ अगले दिनों में, क्योंकि इन दिनों में नए लोग, विज्ञान के क्षेत्र के लोग, IT क्षेत्र के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग संस्कृत सीख रहे हैं, इनका संख्या बड़ी प्रमाण में हो रही है। इसलिए वैसे नए लोग आएंगे तो लिखने वाले भी नए होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ अगले दिनों में ऐसा साहित्य का सृष्टि ज़्यादा हो सकती है। सबको धन्यवाद। It was
our Hegdeji from Bangalore, he's a journalist, literary journalist, and I tell him that between the word and its meaning, it's a lot of science and a lot of fiction too. So when you talk in that sense, perhaps nowhere we can find words to fit for any of our subjects, because there will be every moment you will feel why not? But at the same time, he has his duty as a journalist that we have all these stories that he has mentioned, and we somehow are heading towards the time of science that will emanate from the fiction itself. Our guest, our friend Joseph Tascaro, he will be also talking about climate change. He is from Maharashtra, and whosoever has visited Maharashtra, at least he would have read the name Borivali Express. He is from Borivali. At least. Respected dignitaries and authors, Namaskar. I present my short essay on the subject of fantasy and science fiction in Indian languages since 1947 with respect to Marathi language. Here I wish to thank Devendra ji, sir, for he has what good highlighted our Marathi science fiction literature. And sir, my paper is quite complimentary to your narration. The history of science fiction in Marathi goes back a little 100 years with humble beginning through the translation of science fiction from English and American literature by some reputed authors. The first Marathi science fiction appears to be a translated version of From Earth to the Moon, which was published in Kerala Koke magazine in 1900. Then there are records of fantasies written by Naka Behre Deyakade in 1932, Navakalkar Prithvi Kiran in 1936. These are the two examples of it. The stories largely revolved around the subjects of strange visitors of other planets, interaction of man and robot, machine with a human mind, mysterious and strange happenings, and so on. Most of these tales were narrated in a lighter vein. For example, Tareche Hashya, written by Sri Baranade and published in the monthly magazine Masik Manoranjan in 1915, is considered to be the first humorous science story. The science fiction literature in Marathi took wings during 1950 to 1917 with a steady flow of famous writers such as V.V. Sirwadkar, Kalpanica Tirabar in 1956, Tapa Khambete, Chandravarcha Khun in 1960, Dwaba Kelkar, Antarjnanic Chakshu 1965, Bhara Bhagwat, Udti Tapkadi, UFO in 1965, Gakro Joshi, Masika Masi, another humorous science fiction. This is not meant to be an exhaustive list. During this period, other established writers such as Yashwant Ranjanekar, Dakru Soman, Gajanan Shirsagar were making their marks in the science fiction literature. Narayan Dharap was leading the group with publication of a number of science stories and novels during the period between 1965 to 1970. Some periodicals such as Dhananjay, Her, Nisachar, Sharvila encouraged and helped to increase popularity of science fiction in Marathi literature during this period. Vijnanaha Panka Kalpaniche was published in 2 parts by Bhalva Kelkar, which was a unique experiment then. It consisted of the dense latest scientific information and how to use it in the story. There are stories written merely using new inventions and discoveries also.
The themes largely consisted of outer space and comets. The critics largely ignored this genre mainly because of two reasons. First, many stories are translated. Secondly, the critic held a view that science is a technical and complex subject beyond their understanding. However, the novel magazine run by Anand Antarkar supported this new genre of Marathi literature and encouraged it. If we glance at various science fiction collections in the Marathi, it reveals that they have been edited by science writers only. For example, Marathitil Nivdak Vigyan Katha by Niranjan Ghate, Yantra Manav jointly by A.P. Deshpande and Subodh Javdekar, Vedak Vigyan Katha by Joseph Toscano, Vidnanani. Extrapolation of current science in stories was the next step. During this period, science fiction was used as a satire to expose people such as politicians, publicity-hungry society figures, and also some of the so-called social reformers who practiced double standard life. Whilst many writers used fantasy as a base of their stories, Dr. Jayant Narlikar, a pioneer of science fiction in Marathi, maintained that pseudoscience should not be used in science fiction stories. He considers science fiction as a tool for science communication, and therefore they should not be trivialized. Sri Subodh Javdekar, a popular science writer, is of opinion that science fiction should be a good story first. It assumes the title science fiction because it is founded on a scientific. A commonly accepted definition of science fiction clearly indicates that science fiction is the branch of literature which deals with the effects of science on man. It pictures tomorrow's life, in the state as well as interstate. Today's stalwarts of science stories in Marathi are products of such a versatile movement. Among them are Dr. Jayant Narlikar, Dr. Bal Phonke, Niranjan Ghate, late Sri Lakshman Lamde, Subodh Javdekar, Dr. Kishore Kulkarni. The list continues with Dr. Sanjay Dhole, Dr. Arun Mande, Professor Madhuri Shanapal, Srimati Rekha Baijal, Dr. Meghasri Dalvi, Vivek Bhaleram, Manohar Dinanath, Dr. D.V. Jagidar, Srimati Shubhda Gopte, et al. Many of these are experts from different fields of science. In 1974, Dr. Narlikar not only participated in this competition of Marathi Vigyan Parishad using a pen name, but also won the first prize. And as Devendraji mentioned about his story, Krishna Yuval became a turning point in Marathi science fiction. The story was later included in his collection Ekshachi Dengi in 1979. One view is that the major four issues, namely terrorism, globalization, information technology and biotechnology that currently dominate human life are good fodder for science fiction in Marathi. However, a question is always gets asked, and that is, what is the purpose of science fiction? Two different perspectives are offered. One view is that science fiction be used to propagate love of science among masses, similar to the giving a sugar-coated pill, bitter pill. Other view is that primary function of any fiction is to firstly entertain and can be used as a tool for education as a secondary subject. The science literature in Marathi is now more posed toward an active role of social reformation, and we hope that this continues. The science is an extrapolation of existing prone science. Human life has been continuously receiving different dimensions thanks to the development in science and technology. This obviously has reflected and been appeared in area of science fiction and literature. I am privileged to conclude this paper by mentioning a few related glorious incidents in the area of science fiction in Marathi.
late Sri Lakshman Londe's science fiction Second Einstein was included in the best science fictions worldwide and published by Kansas University in the Road to the Science Fiction, edited by James Byrne in 1989. Thus, the late Sri Lakshman Londe became an international writer. Sri Subodh Javadekar did extensive search in Google and found that there are 52 different definitions of science fiction, and none of them say that science propagation is a purpose of the science fiction. The definitions are quite different than including science in it. Sri Niranjan Bhate, a senior science writer, so far have penned down 230 books on science and related subjects, which comprise 30 books on science stories and science novels. He has also written the history of science fiction in Marathi during 1975 to 2000, which was published by Marathi Sahitya Parishad in 2009. Last but not least, Dr. Jayanta Naligar, a renowned astrophysicist and leading science writer in Marathi as well as in English, was honored by All India Marathi Sahitya Sammelan by offering him presidentship of 64th Sammelan held in Nashik in December 20. For giving me this opportunity to present the paper on such a versatile platform. Thank you. Now, Maharashtra, who presented a picture of science fiction writing in Maharashtra, and especially Marathi language. But at the same time, he has touched so many aspects of science fiction, the relation between science and fiction. But the most valuable thing, he said, that story first, fiction first, should have the element of intelligence. Then comes the piece of science. Here we are having writing. Devendra Nabariji, India's great science writer, before whom we are now present our paper. Fantasy and science fiction in Tamil language since 1947. This paper is trying to give the reader the history of much forgotten and ignored type of speculative. Classical science fiction written by Jules Verne, H.G. Wells, those days are over. Now we are writing for the iPod generation. So our technology, our way of writing, our way of thinking is different. We are living in an era of genetics. We are living in an era of space travel. Everything has become reality. What H.G. Wells was writing, what Clarke was writing, we have seen in our generation come true. So we are of a different generation. This is the oldest is the fantasy. The newest is the science fiction. So the oldest and the newest we have to discuss. If we take fantasy, in Tamil, we have 2,000-year-old of fantasy stories. Many, actually, the Lord of the Rings, Harry Potter will go to the back seat when compared with the imaginations we had in our language. 2,000 years ago, we were telling stories of fantasy. Still, we say those kind of stories to our children, our grandmas and grandfathers. They say peculiar stories. One person, old tradition, Shiva Purana. A lot of fantasy aspects are found in them. And of course, the village gods, for every village god in our Tamil tradition, there is a fantasy story. That's what it is happening. He introduced H.G. Wells, Clarke and all during 1930s itself. He says science fiction is not actually about science. It is about people and how science affects people. See, this is a very important modern, we have to mix it both. It is about science, it is about people affected by science. So both should be mixed when you talk about science and fiction. It is also about people only. It's not about science.
but people using science. Now, since 1947, what has happened in Tamil? But before that, fantasy and science fiction, during British rule, we had a lot of mythology coming into the driving seat to take us to nationalism in our country. Sangam Tamil epic Pattina Palai speaks about a particular port by Karaikal Peruvalathan, and it is actually of 2nd century BC. It speaks about how to build a ship, and that science of entering into has become part of our culture. Tamil's another epic Kandapurana by Sivacharya. It speaks about a magic mirror that can do time travel. Our Tamil Sangam tradition genres like Kundalakesi, written by Nandakutana, a Buddhist epic of 10th century. It mentions about a submarine that appears as a mystical, magical symbol. So, Pachandra stories entered in our culture from Kashmir, and of course, it was in Tamil by Deski Vinayagam Pillai, who gave it as Villangulaga Vindai Kadagal. That's how it came in. Then we have to talk about Subramania Bharati, who gave us the very first fantasy story. I actually want to mention is Kakai Parliament, in which all crows have a parliament, and that is actually a genre, both political as well as scientific. Tamil's first ever science fiction story was actually written by Malan, who is sitting here, Malan Narayanan, the great writer in Tamil. I have to mention is Vidwan, a very important turning point for Tamil science fiction writing. It's actually from his magazine, Tisaigal, which everybody will agree. It introduced the real science fiction stories in Tamil. His story, Vidwan, in his story, there will be a Carnatic singer. How Indian it is more important. Indian science fiction stories should have Indianness in it. A Carnatic singer, his name is Janagi Raman, if I remember. He will be having a person who he will be teaching, a student from USA. That student name is Joseph Ohm. He will present his master with a robot that can really do all households actually. This man, Carnatic singer, will lose his wife. So he needed somebody, so for companionship. But slowly that robot will learn Carnatic music. It will sing even better than the master. So there becomes a conflict between the machine and the man. That's a beautiful story. You cannot imagine such a story can be written in 1969. And that master is sitting here. And such a story started the beginning. In the same Tisaigal, I remember, Kanasu and so many others also gave translations. Udumi Pittan in Tamil has translated a lot of science fiction stories. And then we can talk about other science fiction writers now. For example, Kalki, who came forward with Mohini Devu, was a master in fantasy. Is really a great writer of fantasy. With his Mohini Devu, he entered the fantasy literature. Then we call Kalvi Gopalakrishnan, who gave us a lot of scientific genre for children in his Kalvi Sindanai magazine. Then Pena Apusami can never be forgotten. He wrote with the pen name Vignani. Vignani will be the pen name. He wrote a lot of stories. Mandra Kambalam is a fantasy science fiction. It will be traveling to so many places. In a mat they will be traveling. That's also one of the very best. We had a lot of magazines supporting. For example, Manjari, which was brought out by Ramaratnam, Kalaimahal Ramaratnam. Kiva Jagannathan was the editor. S. Lakshman took care of the entire magazine. Science fiction translations appeared in that.
So that became a very important readability when we were doing in school and colleges. Then we enter the Sujata era. Sujata is the most significant science fiction writer in Tamil. His real name was Rangarajan. He can be described as W.C. Clarke, come Isaac Asimov in Tamil. I am a great fan of Sujata. I write science fiction only the root of that great man. And nobody can deny that he has achieved great heights, and he took science fiction of Tamil to the great heights also. His Mindum Jeno, Computer Kiramam, Yenine Indira, they are very famous. He has written science short fiction, science novels, actually hundreds of them. He started online magazine Vinambalam. It's also the first. Nailan Kairu, etc. are his significant stories. Many science organizations also came up in his time. Another Vigadan, Kumudam, like popular magazines, they started publishing Sujata stories. So everybody got interested in reading science fiction first. You have to make a separate base for the writing. Ira Murugan comes next, who works in the IT sector. He has written fantasy as well as science fiction. His work, Arasar Vamsam, is a fantasy. He released Silicon Vassal short story fiction in Tamil and AAA Vidi biofiction novel. These are all his great achievements. Tamil Magan is yet another significant science fiction writer now. Operation Nova, Vengai Nurdin, June, Kuripugal. These are all Tamil Magan's fiction, science fiction novels. The author who is standing here, Ira Natarajan, alias Aisha Natarajan, is award-winning science fiction writer. I have really entered with, actually, when I was started writing for children, and then I switched over to science fiction. Proto-science fiction, Aisha story is a big hit. Famous science fiction novels like Circus.com, 1729, the Ramanuja number, Darwin School, Vande Mataram. These are all best-selling science fiction novels. Nellai Sumuthu, a scientist, he really taken as a fantasy fiction. He has also written a couple of science fiction books. Jayamohan, another significant writer in Tamil, brought out his Visumbu, full-fledged science fiction star story come magical realism works. Disayettum, translation magazine brought out here another important contribution. Yuma Vasugi has translated many fairy tales which can be, listed as fantasy writings. It's only for translating. Good translators of science fiction and fantasy in Tamil, not only Yuma Vasugi, R.V. Raju, Pattu Bhubadi, and others. Many science organizations of present age also contribute for this cause. The Tamil Nadu Science Forum with its Tulil magazine, Arivial Palage, Sirar Elthalar Sangam, and many science organizations, they have come out with science books and they are supporting the science fiction things. Fantasy literature and science fiction have made significant mark at various levels in Tamil. Vikram, a film by Kamal, Tick 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 by Jayam Ravi, Indiran, a very famous film by Rajinikanth, and the Sarvadaram, again Kamal. These are all adaptations of science fiction. Today, multimedia plays a role in making science fiction animations all in Tamil. Okay. These animations, including Ira Natarajan here, have entered into the animation as well as graphics, science fiction works in Tamil. We even have science fantasy role-playing game series, video games have come in accordance with the science fiction concepts. Tamil original versions I am talking about. Because we people from Tamil Nadu live everywhere in the world. We live, take Paris, to take anywhere. There are our people.
our language speaking either from Sri Lanka or anywhere. So all these people together contribute to the greatness of science. You all know very well Google pages, when you go for searches, Tamil is the third world's largest language to be searched in Google. So science, science fiction, fantasy, part and parcel of Tamil life today. Though there is still a long way to go to get a total unique identity among other literature forms and recognition from the world science fiction, we have crossed noteworthy milestones. Still young and energetic, as Devendra Navariji has said, still young and energetic. This particular genre is attracting the new IT generation to enter into and work from the basics all the pioneers have said. And we hope the 21st century will be the best science fiction century for Tamil language. Thank you. And the subject itself, this fantasy is the basis of life. If you don't fantasize, you just cannot live. Especially in our childhood. I tell you, one of my books was published in 1973. I wrote something about speed. I was caught in a traffic jam. They were influenced by me. I mean to say that people go on thinking and then they get something. Science is not basically what you see in the form of inventions. Science is basically thinking. If you have a question in mind, that makes your science. That's your quest. And I tell you very honestly, to our writers, that it's a false statement that we invent. We don't invent. We only discover. Birds were flying before we got that aircraft. Fish was swimming before we made ship. So many other things. It's only that we have to just try to look into the nature. Just try to ponder over it. How these colors come out. Is there anybody who could just analyze why a flower has so many colors in it at the same time? Not that easy. Why is something sour and why is something sweet? It takes a lot of time to reach. And I tell you, in our weddings, in our dastan, what I say, you imagine a Hanuman. Like, how could he manage to get the Sanjeevani Booty along with that? It is now we know that there is no weight in space. Hydraulic weight was discovered after, or Newton's, that gravitational law, etc. But before that also, whenever somebody would pluck apple and it would come to ground only. Or whatever we would throw towards the sky, it would come. And it was very late that we found in space, there's no weight, no weight like it. In the same manner, so many things are there. For example, I tell you, once I wrote something on the heart, and I said in that, डॉक्टरों ने दिल को साग का एक पौधा बना दिया, एक क्यारी से उठा करके दूसरी क्यारी पे बोते हैं। हालांकि दिल तरह तरह के, ये लोग समझते हैं सिर्फ 4 खाने इसमें, it's not only 4 columns। ये रेशम के दिल होते हैं, जरा कहीं और कंची हो तो यहाँ खराश पड़ती है, सिलाई कहीं कोई दिखाए तो यहाँ आग लगती है। और ये शिप नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या नहीं डूबता और दिल कहाँ कहाँ नहीं डूबता। I tell you very honestly, I had a cardiac surgeon, my friend Dr. Harman Singh.
he used to tell me, come to meet us sometime. I would always tell him, you pray to your Vaheguru that I should come to you on my foot, walking, not that others carry me to you. And he was telling me that from your heart, I have to change my horizon about art, what we did today. There are so many things. And actually, I tell you, none of my friends who know Urdu, if they have developed taste in reading Urdu, it was all because of fiction. Then science fiction in the form of detective novels. We would keep them within the vicinity, close to our bed, and when we get time, we would read. And the children, by get to this science fiction, and they develop that habit of thinking. My friend told you that he wrote a book in 1979. It was actually International Year for Children. I also wrote a book in that year, and I dedicated it to children. Just listen. उन कमसिन बच्चों के नाम, कम उम्र के कमसिन बच्चों के नाम जो अपने वालिदैन से उम्र रसीदा है, जो अपने माँ बाप से बड़े. Everybody would talk about it. Those days there were no mobiles, and now I ask those friends whenever they have a problem with their mobile or laptop, they just ask the youngest person in the house. They just you see, it's not ringing, it's not doing this, it's not doing that. It is actually, we should not take it as fiction only. All is rough, red, but the milk is so soft and white. In the same manner, how does a rough plant, full of thorns, give me a rose so beautiful, so soft, and then with that fragrance? So it's actually thinking, just trying to go nearer it. That is science. And it's not science exactly from the beginning when we started. It's we fantasize. Could it be this? Could it be that? So many things like that. And then ultimately, we get good results. Another thing I tell you, don't neglect your mythology. Somewhere in mythology, in our myths, we feel it is redundant, how could it be possible? But I tell you, it makes the basis. Now think of, my friend is from Karnataka, think of Girish Karnad's Haivatna. Apparently you take it as a myth. But there must be some basis, because we now transplant. जैसे मैंने कहा कि साग का पौधा, I tell you sir, when I started thinking about speed, the conclusion was, एक ज़माना आएगा, आदमी दौड़ेगा, पैर नहीं होंगे, सुनेगा, कान नहीं होंगे, देखेगा, आंखें नहीं होंगी, और स्पीड इतनी होगी कि जब वो चांद पे जाएगा, शायद ये उन्हीं दिनों नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, उतनी ऑक्सीजन तो उसकी जेबों में होगी जितनी उसको चाहिए आने जाने में. Can you think of the time when in Bombay we had only faith, or later on ambassador? Can you think of Delhi when you had those patpatis, 6 people sitting on the end now with the metro? It's actually the speed in our buildings, in our dastans. We have seen in Rajabali rules that Fasane Ajay, he goes with a stick, not stick, actually a piece of wood. He has to cross a mountain. What to do? He just thinks, his mentor tells him, strike it. He strikes it with the mountain. That time we didn't have that nuclear energy and all this, we didn't have these things, and he might have not known. And another thing I tell you,
somehow you get things at your door, but you don't look at it. Now you see, today we ask our children to read English, to get those stories. Then they come from America, they come from Europe to tell us what ethics is, what aesthetics is, what philosophy is. Can you think of those poets who composed those vachanas in Kannada? Think of Akkamahadi, think of Baswani, think of Alma Prabhu. You see the depth in those vachanas. That tells you a lot about life. That Europe has yet to write in their books, but they come and try to teach us. Then another thing with us is that we got a very less chance to look at ourselves, to see what is inside us, what is within our pockets. And I tell you very honestly, life is like that. Whenever I go to an airport now, I just put off my waistcoat. Earlier it was not the routine, I would put it. They would tell me, why? I would say, I don't know what is in my pocket. And if a teacher goes to class, he also doesn't know what is in his mind pertaining to a particular subject. When the student asks a question, he starts thinking. He gets something. Actually, essay was based on this. Montaigne started thinking that what I have about the subject. I am thankful to Sahitya Academy that they invited me for this session, and I was enlightened by these young writers. I have visited all the places, but I don't know about this Jati member for years. But the other places I have all, very seniors I have met, and everybody is working. And in literature, don't think that fiction, that was a time when fiction was not included in classical literature. Even for Sahitya Academy, we would not give any award to a critic. It would be for creative writers. But now fiction also forms a part, a section of literature. So is the science fiction also. Take care of these gentlemen by their writings, by their prompting. You will get many scientists in future, and Sahitya role also will be in that, because they had put the banner fantasy and science fiction. I am thankful to them that I got this chance being with you. Actually, I belong to a place where God is kept some 5,000 feet height under our feet. When we look to the plains, we can't imagine what the actual size, what the actual height of a person is. They gave me a chance to come to the plains, and I could just try to feel what my size actually is. And but at the same time, I'll tell you, when Shahidya was asked to go to Kashmir, he said, no need of my going there, I have no look till there. And now we read aesthetics. In 8th century, our Anand Vardhan theorized. There were so many people, Mamat and Chavendra, and in fiction, I should say for these gentlemen, I don't know whether they have ever thought about it. It is actually one of our good. Another one is saying, yes, it is possible. And what happened when I said, if he learns Sanskrit within 6 months, I will not write in Sanskrit. I will write in Krishna. It is good luck or bad luck. Kings learn Sanskrit within 6 months. He left the court, went to a jungle, started narrating stories. There was that Bhojpatra, and he wrote Prakarana. And after writing it, he just narrated it, and it is said that birds came all around, and then what he did, he got some fire and started burning those birds.
when it was only last chapter or last volume that was there, King got the idea, some courtiers told him that we have been harsh to Buddha. He was right. It is your intelligence actually and the skill of the teacher who could teach you within 6 years. The king went with his courtiers to Buddha. It was only one. Can you imagine? So the basis of fiction also is, it has taken place in our place. And I tell you, if you talk of Urdu fiction, it starts from Ratnadar Shah, in the Krishna. And the finishing touch, who has given it? Sartha Samman. Again a Kashmiri. So with fiction, results fiction, our, what should I say, our earth, our land, our clay, our stones, our flora fauna, it's a deep relation that we can't separate fiction from Kashmir or from Kashmir. But so far the science fiction is concerned, see, we have found a needle there. We have found these couples of bones, etc. of 5,000 years. Since we have the oldest written history in Kalhana's Rajtaranga. And we thought in a scientific manner about literature, about rasa. So we had this, but we are very unfortunate. When I look at my life, my literature, can you imagine they say that I am the founder of essay in Kashmiri? That means fantasy started with me in Kashmiri literature. We don't have science fiction. I think scientific technique would help. If these seminars keep on going and they keep on publishing these things, we will get enriched. Once again, I thank you all for listening to me, giving so much patient hearing, and then these gentlemen who were about us, they thought that he will leave us like this, he will not speak. But I was just waiting for my turn to come. And I am a man who could speak from here, not from the chair. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ज़मान अज़ुर्रा जी। बहुत ही अच्छा सत्र रहा और इस सत्र में जो सबसे खास बात निकल के आई वो ये कि हम फैंटेसी या साइंस फिक्शन जो भी लिखे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी है फिक्शन होना, उसको रचनात्मक होना, जो कि किसी भी पाठक के लिए प्राथमिक गुण है, वो एक रचना का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। और जैसा कि शुरू में ही उद्घाटन सत्र में उद्घाटन वक्तव्य देते हुए देवेंद्र मेवाड़ी जी ने पूरे भारतीय भाषाओं के साइंस फिक्शन और फैंटेसी लेखन को अपना लक्ष्य किया था और बहुत ही अच्छी हमें जानकारियाँ दी थी। और इस सत्र में हमारे बीच में अंग्रेजी से रजत चौधरी जी ने, मराठी से जोसेफ टुस्कानो जी ने, ओडिया से कमलाकांत जेना जी ने, संस्कृत से जी ने और तमिल से इरा नटरासन जी ने जिस खूबसूरती के साथ पूरी परंपरा को बताया है और आज जो लिखा जा रहा है उससे हमें परिचित कराया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार देती है, अनुवाद पुरस्कार देती है, मुख्य पुरस्कार देती है। इसमें इस सत्र में कई ऐसे वक्ता हैं जो हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं और उनकी ऐसी कई कृतियाँ भी हैं। जैसे यहाँ पर खलील साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे साइंस फिक्शन राइटिंग के लिए ही आपका एक उर्दू साहित्य में बड़ा नाम है। हमारे बीच में मंच पे यहाँ पर बैठे हुए विद्वान हैं जिनको साहित्य अकादमी ने उन कृतियों को पुरस्कृत किया है जो साइंस फिक्शन है। आजकल साहित्य अकादमी ने एक विशेष अपना कार्य शुरू किया है, जिन कृतियों पर बाल साहित्य पुरस्कार मिला हुआ था उनको हम दूसरी भारतीय भाषाओं में ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी हमने 20 किताबें अभी नई उन किताबों से जो पुरस्कृत थी उनको हम हिंदी में पहले ला रहे हैं, फिर उसके बाद और भारतीय भाषाओं में ले जाएंगे। तो इस तरीके से अकादमी लगातार इस विषय को लेकर के सतर्क है, सजग है और क्रियाशील है। ये उसी सोपान है एक हमारा
हम ज़रूर इस मुद्दे को आगे भी जारी रखेंगे और आप सबका साथ इसी तरह हमको मिलता रहेगा। मैं आप सबके प्रति भी अकादमी की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने सहभागिता की। आप सभी अब चाय पर आमंत्रित हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, एक और सूचना देना चाहता हूँ। आज हमारा एक कार्यक्रम शाम को 6 बजे 72 सदस्यता अर्पण, जो कि साहित्य अकादमी का सर्वोच्च